So here we are talking about, when we are talking about the adjective, it is describing the noun in a superlative degree. So there we will use the. He is the bravest, superlative degree of all. You are the one of the most wonderful students I had ever taught. सुपरलेटिव आ गया ना, द मोस्ट वंडरफुल. तो कहाँ कहाँ पे हम द लगाते हैं? जैसे एक तो हम प्लूरल नाउन्स के आगे द लगाते हैं, ठीक है ना. आई टोल्ड यू प्लूरल नाउन्स के आगे. बट अगर हम उनके बारे में जर्नली बात करें, वी विल नॉट यूज़ दैट. ठीक है. इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट सम स्पेसिफिक ऑरेंजेस, देन वी विल यूज़ द. So all this you have to start writing from here in your notebooks. Start writing from here and keep on writing. All these points you have to mention in your notebooks. So then first point is, then we want to particularize that noun. Then we use the, when it is mentioned again, you have to give the examples also. Okay, write the examples also, write the clause also and the examples also. So we have discussed 3 clauses. Then we come to the next one. Here it is, with the comparative adjectives showing proportion. Comparative adjectives के साथ भी यूज़ होता है जहाँ पे proportion शो कर रहा. The braver you become, the less you fear. Means proportion आ गया ना, कि जितने ज़्यादा brave होगे उतने ज़्यादा तुम्हें डर कम लगेगा. तो here it is showing the proportion. So we are using the on the both parts. The more, the merrier. जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा अच्छा. Then the next, in another expression of comparison as follows. Again we are doing some comparison. He is the most experienced of all the 2 officials. हम कंपैरिजन कर रहे हैं. कंपैरिजन हमेशा 2 में होता है, ठीक है ना. सो ही इज़ द मोर एक्सपीरियंस्ड. दोनों में से जब वो मोर एक्सपीरियंस्ड है तो वहाँ द लगेगा. When the noun is considered to be unique or extraordinary. जब कोई नाउन बहुत यूनिक हो और एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो. दिस इज़ द कार आई वॉन्टेड टू बाय, द ओनली और द बेस्ट कार. मैं यही कार लेना चाहता था, तो वहाँ पे द लगेगा. दिस इज़ द हाउस आई वॉन्टेड टू बाय, मीन्स मैं यही हाउस खरीदना चाहता था. मीन्स देयर इज समथिंग स्पेशल. शी इज़ द टीचर टू क्लैरिफाई योर डाउट्स, द बेस्ट टीचर. वन द थिंग इज़ ओनली वन और यूनिक. जब आप कोई एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करें जो या तो एक ही है या बहुत डिफरेंट है, अनयूजुअल है. लाइक the sun, the moon, the equator, the sky, the earth. So all these are very unique things and they are found only one, right? There is no other parallel to them. So no capital letter at the beginning for these nouns. Use the. When the identity of a person is known to the readers or listeners. कैसे? जब आप उस पर्सन को जानते हैं, सारे रीडर्स जानते हैं या लिसनर्स जानते हैं, उस आइडेंटिटी को जानते हैं पर्सन की. जैसे द प्रिंसिपल, द प्रेसिडेंट, द डीन, द प्रोफेसर, द टीचर. ठीक है. व्हेन द नाउन रिप्रेजेंट्स द होल क्लास एज अ कॉमन नाउन. जब हम किसी क्लास के बारे में बात करें, पूरी जाति के बारे में बात, जैसे द कैमल, तो इसमें सारे कैमल्स आ गए ना. द कैमल इज़ द शिप ऑफ डेजर्ट. तो यहाँ पे वी आर रिप्रेजेंटिंग द नाउन, द होल क्लास, पूरी क्लास को मेंशन कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है. द पीकॉक इज़ मोस्ट ब्यूटीफुल बर्ड, मीन्स पूरी बर्ड की जो क्लास है यहाँ पे, मीन्स जो डेजर्ट की शिप किसको कहते हैं हम, कैमल को. तो पूरी जो उनकी क्लास है. व्हेन द नाउन इज फॉर्म बाय एन एडजेक्टिव और अ पार्टिसिपल टू रिप्रेजेंट अ क्लास. जब नाउन एडजेक्टिव या पार्टिसिपल की तरह यूज़ होता है क्लास शो करने के लिए. कैसे? मदर टेरेसा एम्ब्रेस्ड द पुअर. पूरी क्लास हो गई. पुअर मीन्स सारे गरीब लोग. द डेस्टिट्यूट मीन्स जो होमलेस हैं. तो ये पूरी क्लास शो कर रहे हैं ना ये वाले वर्ड्स, सब लोग. तो वहाँ पे भी द लगता है. अपलिफ्ट द डाउन ट्रोडन एंड डिस्पाइज्ड, मीन्स जिनको जो बेचारे नीचे गिरे हुए हैं या जो अनवांटेड से हैं, जिनकी कोई वैल्यू नहीं, उनको अपलिफ्ट करो. तो वहाँ पे भी द लगेगा.
ठीक है, तो ये आपको रूल्स लर्न करने पड़ेंगे. यू हैव टू कीप इन माइंड वाइल वी आर यूजिंग द आर्टिकल्स. सो वेयर यू हैव टू यूज़ द. सो बिफोर द नेम्स ये आ गए कुछ, ये भी आपने लिखने हैं पूरे नोटबुक्स में, सारे लिखने. रेंजेस ऑफ माउंटेन्स, हिल्स, द एल्प्स, द अरावली हिल्स, ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स. ठीक है, रिवर्स के नेम के आगे गल्फ्स हैं, कैनाल्स हैं, सीज, ओशंस, वेल नोन बिल्डिंग्स. ठीक है, होली बुक्स आ गई, न्यूज़पेपर्स आ गए, ट्रेन्स, शिप्स, एरोप्लेन्स, द शताब्दी, द टाइटैनिक, द एयर इंडिया. ठीक है, कार्डिनल डायरेक्शन हमारी ईस्ट वेस्ट साउथ हैं जो, उनके आगे भी द लगेगा. इन्वेंशंस हो रही हैं कोई बड़ी, द टेलीफोन, द हेलीकॉप्टर. कंट्रीज विद अ कॉमन नाउन. कॉमन नाउन मीन्स जैसे ये पूरा है ना, द यूनाइटेड किंगडम, यूएसए या यूएई, तो इनके आगे द लगेगा. ठीक है, कॉमन नाउन है ना इनका. होल फैमिलीज, जब हम किसी पूरे खानदान के बारे में, द कांस, द खान्स, द कपूर्स, कुछ भी आ सकता है, द कपूर्स भी आ सकते हैं. ठीक है ना. यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट विद बाय, जहाँ पे बाई लगता हो ये मेजरमेंट के आगे, बाय द डजन, बाय द लीटर, तो वहाँ पे द लगेगा. करेक्ट द एरर्स इन द फॉलोइंग to make the acceptable sentences. Now what errors? We have to find out the errors. I need bath. I need a bath. He is the Padma Vibhushan. He is the Padma Vibhushan या अ, यहाँ पे अ आएगा. He is a Padma Vibhushan means टाइटल मिला हुआ है तो वहाँ पे अ लगेगा. This is historical monument of pride. This is the. We are talking about some special historical moment, so this is the historical moment. He is a experienced. A की साउंड है तो क्या लगेगा, an experienced technician. I waited for an hour. अ की साउंड है ना. A swimming is the best exercise. A swimming तो नहीं ज़रूरत यहाँ पे. We are talking about some exercise that in particular, so the swimming. The swimming is, no, I don't think that is needed. So we don't need to write here. Swimming is the best exercise. No need. We traveled at the speed of 70 kilometers an hour. Elephant is, we are talking about the class, so here we will add the elephant. ठीक है ना, तो यहाँ पे द लगेगा क्योंकि हम यहाँ पे पूरी क्लास की बात कर रहे हैं ना. इट रिप्रेजेंट्स द होल क्लास. द एलिफेंट इज अ मैमल. द एलिफेंट इज अ मैमल. ज़ीरो आर्टिकल्स, या आर्टिकल्स कहाँ नहीं लगते, कहाँ कहाँ नहीं लगते. सो यू डू दिस थिंग. ये एक्सरसाइज आप अपनी नोटबुक्स में कर लीजिए और ये भी आपने अपनी नोटबुक्स में लिखना है. टेबल बनाइए और ऐसे ही लिखिए. नेम ऑफ मटेरियल, ज़ीरो आर्टिकल, नो आर्टिकल. दिस टेबल इज़ मेड ऑफ टीक. वाटर इज स्केर्स दिस ईयर. मटेरियल्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो वहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं लगता. वाटर इज स्केर्स दिस ईयर. एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के आगे कुछ नहीं लगता. जर्नल सेंस में मैन इज़ द क्रिएटर ऑफ टेक्नोलॉजी, ना तो अ लगेगा ना द मैन इज़ क्रिएटर ऑफ टेक्नोलॉजी. नो, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनीथिंग स्पेसिफिक, वी आर टॉकिंग इन जनरल. प्लूरल नाउन्स रेफरिंग टू अ क्लास. Pilgrims, the pilgrims, bother no pains, no. Children like, the children like to have, no. We are not talking about anything special. Name of meals के आगे नहीं लगता कुछ भी. You should not skip
The breakfast nahi, you should not skip breakfast. They have invited us for lunch. Name of diseases, mumps, measles, tuberculosis, इनके आगे नहीं लगेगा. The word school, college, church when the purpose is meant. Ram goes to school by bus. To school to study. किस लिए जाता है स्कूल? To bus. अगर हम पर्पस से बात कर रहे हैं, is going to school by bus to study, so we will not use any article. But exceptions कहाँ होती हैं? Ram's mother has gone to the school to attend the meeting. Means here he has some purpose to go, right? The school refers to the school building here. She has gone to attend the PTM. So that is why here it is referring the school building. So यहाँ पे the इसलिए लगाया हमने. With his phrases hand in hand from right to left and all that, these phrases we don't use any article. But times of the day: at dawn, at dusk, by night, at twilight, at noon. But in the morning, in the evening, we use the exceptions are here. With the words like father, mother, uncle, etc., we don't use any article. Father's health is worrying me. Mother has gone to the mart. The mother नहीं. Okay. The या के लगाने. Articles can be used when these words are used as common nouns. जब हम common nouns के बारे में बात कर रहे हैं, fathers, the father went to a market. Here we are talking about common noun, the father. No article is used with nouns in phrasal verbs. जो phrasal verbs होते हैं ना, वहाँ पे भी कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होता है. ये सब आपको लिखने पड़ेंगे एंड लर्न करने हैं. यू हैव टू लर्न इट. दिस ऑल्सो यू हैव टू लर्न इट. टू गो टू बेड, to take part in, to lose heart, to take to task, to shake hands, to go home, to catch fire, to take offense, to take place, take care of, to make use of. So in sub phrases में there is no article. No article is used. No article is used with the nouns in several phases. On foot or you're on duty, on strike, at hand, in case, by hand. So you have to learn all these by heart. Learn and write also. Write in notebooks. When we refer to the same person, thing with different names or qualities, the article is placed only before the first name. आर्टिकल कहाँ पे लगता है? When we are referring to same person, ठीक है, या थिंग with different names और different qualities. जैसे the director and producer, तो यहाँ पे the दोबारा नहीं लगेगा. The director and the producer नहीं. The director and producer of the film has arrived. Here director and producer refers to the same person, so we will add an article there. I saw a blue and red aeroplane. Only one aeroplane. So here we are using a. The article is repeated before nouns when we refer to different people or things. The director and the producer of the film have arrived. अगर हम डिफरेंट लोगों के बारे में, डिफरेंट चीज़ों के बारे में बात करें तो हम द दो बार लगाएंगे. बट यहाँ पे डायरेक्टर प्रोड्यूसर रेफर टू द सेम पर्सन. ठीक है ना, ही इज़ द वन. डायरेक्टर भी है, प्रोड्यूसर भी. यहाँ पे द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर अलग अलग हैं, आर डिफरेंट पर्सन. हियर दे आर सेम, दैट इज़ वाई one time the is used. Here they are different, so here we have added to the. I saw a blue, a red means here two different aeroplanes. When we have seen one only, so we have used only once. But when we are looking at two, we have seen the two, so we will use twice.
Use an or the where necessary. Yesterday in the evening, I saw an old man and a girl sitting on the pavement in the public square. They were busy tying flowers and making garlands. So हमने यहाँ पे एक बार यूज़ कर लिया तो the garlands that they made were colorful and wanted to buy one. I approached the old man because we have already talked about him. So here this is the specific old man, and I approached the old man and the girl because they are two different, to buy a garland. To buy the garland. I approached the old man and the girl to buy a garland. The garland. Again, we are talking about that thing. So now the garland has become specific. They eagerly greeted me with a smile. I inquired how much it would cost me. The old man replied, 25 rupees a garland. Here a means one garland. I delivered him a money. I delivered him the money without any bargain and bought the garland which had resplendent flowers. I deeply smelled its fragrance. They flashed a smile once again, and I came home with the garland I had brought from them. Correct the errors. Every day in the morning I go for a walk. Go for a walk. What nuisance these streets urchins are. What the nuisance. We went to our hometown by train. He stood for the MLA. He stood for MLA elections. The MLA elections, I think. He stood for MLA. MLA election. He stood for MLA elections. Now he is an MLA. Onions are sold by a kg. The musician and the composer is busy now. The musician and the musician and composer is busy now. He is the one person. Is busy now means he is the same one person. The doctor and the nurse. The doctor and the nurse. Here they are two different are standing there. Use articles. A dog is an animal. The dog is an animal. A dog is an animal. The cow gives milk. Cow gives milk. The cow. The cow नहीं यहाँ पे भी कुछ नहीं. The cow gives milk. Cow gives milk. Orange grows on tree. An orange. Then we are talking about something specific. The orange grows on trees. Grows on tree. Orange grows on a tree. The orange. We are talking about the class. Do you take sugar in tea? Do you take sugar in a tea? Do you take sugar in tea?
He writes the letter. He writes a letter on paper. The cat has a tail. Mount Everest is the highest peak. The principal is not in town. The cat has a tail. A cat has a tail. So with this we have finished our this chapter articles. So all of you complete your work.